This is the fourth part of our discussion on inventory management, and this is 159th module of our course of financial management. Before this, we have talked about several aspects of inventory management, and we have seen that inventory management is quite a complex process where we need to control the cost of inventory and we need to keep the supply of inventory intact. यानी अगर हमारे पास इन्वेंट्री कम हो जाए तो हमारी प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है, हमारी सेल्स इफेक्ट हो सकती है, जिससे हम लॉसेस में जा सकते हैं। अगर हम इन्वेंट्री को एक हद से ज़्यादा ख़रीदें या उसकी क्वांटिटी ऑफ परचेज मुनासिब ना हो तो उससे भी हमारी कॉस्ट में इजाफा हो सकता है और हमारे प्रॉफिट नीचे जा सकते हैं। So, in the light of this discussion, in this module, we'll be talking about various levels of inventory. यानी जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं और अपने पास स्टोर करते हैं तो उसके बहुत से लेवल्स हैं। ये लेवल्स क्या है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, दिस इज व्हाट वील डिस्कस इन दिस मॉड्यूल। You can see that the levels of inventory may be defined as maximum, average, reorder, minimum, or danger level. Let's begin with the maximum level of inventory. यानी ये वो लेवल है कि जिससे ज़्यादा हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और इन्वेंट्री हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होगी, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी that pilferage or loss of inventory or damage of inventory starts. So we set a level by calculating this level of inventory, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं और उस फॉर्मूले से हम ये डिटरमिन कर लेते हैं that what is the maximum level of inventory that we should have. Now, in contrast to this, the other level of inventory is the minimum level. यानी हमारे पास इन्वेंट्री से कम नहीं होनी चाहिए। तो वी ऑल्सो नीड टू सेट अ लेवल वेयर द इन्वेंट्री शुड नॉट बी लेस देन दैट, एंड दैट लेवल इज कॉल्ड द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। नाउ वी कैलकुलेट दीज टू लेवल्स, दैट इज मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल, by considering the requirement of inventory, by considering the production requirement, by considering the sales requirement. So from the production and sales requirement, we come up to the requirement of inventory, and then we talk about that how much will be the maximum and minimum levels. Other than these two levels, we also have another level which is called the danger level of inventory. Now, when we say that there is a minimum level and there is a danger level, so the question arises, what is the difference between the two? Minimum level is the normal routine level which will be reached every time when we are purchasing inventory and using it in our production. यानी जब हम इन्वेंट्री खरीदेंगे और उसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो मिनिमम लेवल हमारा रेगुलरली अचीव होगा और उसके बाद फिर इन्वेंट्री हमारे पास आएगी. बट एट टाइम्स इट हैपन्स दैट द इन्वेंट्री, the goods do not reach to the factory or to the business in time. हमने पहले बात की थी लीड टाइम और लीड टाइम यूसेज की, यानी जब हम ऑर्डर प्लेस करके इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास गुड्स पहुंच जाएं और उनके पहुंचने में देर हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा इन्वेंट्री लेवल मिनिमम लेवल से भी नीचे जाना शुरू हो जाएगा. एंड इफ इट फॉल्स इवन बिलो द मिनिमम लेवल, then we also have set another level of inventory which is called the danger level. That means the petrol in our tank of car has gone to the level where in emergency we have to rush towards a petrol pump. That means it is that level of inventory where we have to rush in emergency to purchase and to procure the goods, the units, so that our production is not stopped, so that we do not face a situation which is called stock out. एक ऐसी सूरत हाल कि हमारे पास प्रोडक्शन के लिए बाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेबर मौजूद है, ओवरहेड्स मौजूद है,
सेल्स और डिमांड मौजूद है, लेकिन गुड्स और इन्वेंट्री ना होने की वजह से हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए. दिस इज to the level when it is reached, everything else is not more important than procuring the inventory. And this level is called danger level. And this is below the minimum level of inventory. Then we also calculate that how much inventory do we carry on average. This average inventory level will be the level which we always have. We should always have. In normal circumstances, in normal levels of production, this is the level of inventory that we maintain. Other than this is what is called the reorder level. A reorder level is with reference to our lead time and lead time usage. हमने इसका जिक्र पिछले मॉड्यूल में किया था कि हम अपना लीड टाइम डिटरमिन करते हैं कि वो कितने दिन, हफ्ते या महीने है, और उसके दौरान हमारी कितनी कंजम्पशन होगी गुड्स की. और इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए वी डिटरमिन द रीऑर्डर लेवल ऑफ आवर inventory items, which means that when the level has reached, we should place the new order. And that is the level कि जब वो level achieve हो जाएगा, जब वो level पहुंच जाएगा, तो हम नया order place कर देंगे. नतीजतन क्या होगा कि उस order को place करने के बाद हमारे पास इतनी inventory के units मौजूद होंगे कि हम उन्हें consume करते चले जाएं, और जैसे ही हम मिनिमम लेवल को टच करें तो हमारे पास नया ऑर्डर पहुंच जाए और हमारा लेवल दोबारा से इन्वेंट्री रीप्लेनिश होके मैक्सिमम लेवल के ऊपर चली जाए. सो द रीऑर्डर लेवल इज डिटरमिन्ड बाय कंसिडरिंग द लीड टाइम ऑफ procurement of inventory and the lead time usage. So in this module, we can conclude our discussion of this module by saying that there are various levels of inventory that one has to consider and calculate. Every level of inventory has its own significance, and these levels are maximum and minimum and average and reorder level and danger level, and all these levels are calculated, are kept there so that the inventory could be properly managed, cost can be curtailed to minimum, and production can be continued as it is planned.